Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were talking about the business transaction in the previous lesson. Here is a summary of the previous lesson. We talked about what the business transactions are and what are the basic features of a business transaction. We discussed that if the financial position of a business concern changes on happening of a particular event, which is measurable in the terms of money, that event is regarded as a business transaction or a accounting transaction. In addition to this, we talk about the different features, different properties of a business transaction. We talk about that there must be two parties involved in a business transaction. In addition to this, it should be a monetary event. It should be measurable in the form of money, and it should affect financial position of the business. In addition to this, the business transaction must result the transfer of goods or services among the parties, uh, and it must have a documentary evidence. Only those transactions are recorded in the accounting which are have a documentary proof. Similarly, the business transaction should belong to the business only and not to the owner of the business. And at the last, it must be initiated by the authorized person. Today, we will talk about different types of business transactions. In accounting, depending upon the nature of transactions, we may classify the business events on the following grounds. Number one, cash transactions. Number two, credit transactions. Number three, paper transactions. And then internal and external transactions. Now we will discuss all these types of business transaction one by one. The very first is a cash transaction. A transaction in which cash is paid or received immediately at the time when the transaction occurs is known as cash transaction. किसी भी transaction के अंदर जब ट्रांजैक्शन के मौका पर ही पेमेंट कैश की सूरत में कर दी जाए तो उसको हम कैश ट्रांजैक्शन कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल, if you sell some goods to Mr. John for $50 and Mr. John immediately pays $50 cash for the goods purchased, it is a transaction, it is a cash transaction because you have immediately received that particular amount for the goods sold to your customer. Similarly, if you buy furniture for your business for $750, you immediately pay $750 cash to the supplier and get the possession of the furniture, it is also a cash transaction. दोनों केसेस के अंदर हम देख रहे हैं कि सेल एंड परचेज के मौका पर ही, ट्रांजैक्शन के मौका पर ही कैश पे कर दी गई है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन कंसिडर करते हैं. Then there is a credit transaction. In a credit transaction, the cash does not change the hands immediately at the time when the transactions occur. In other words, the cash is received or paid at some future date. तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर कैश ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट कैश इमीडिएटली पे नहीं की जाती, बल्कि इसको पोस्टपोन, उसकी पेमेंट को पोस्टपोन कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, if you buy some merchandise from your vendor for $1000, upon your request, your vendor agrees to receive the payment of $1000 for goods sold to you. Next week, you take the possession of the goods and transport them to your store. It is a credit transaction because you have not made the payment in cash immediately at the time of purchase of the commodities. जब भी हमने देखा इस केस के अंदर हमने $1000 के वर्थ की परचेज़ की है और हमने अपने जो सप्लायर है उसको रिक्वेस्ट की है कि उसको इस परचेज़ की पेमेंट नेक्स्ट वीक की जाएगी, जबकि हमने पोजीशन भी उसकी ले ली है और उसको हम अपने गोडाउन के अंदर ट्रांसफ़र भी कर दी है, लेकिन उसकी पेमेंट चूँकि पोस्टपोन कर दी गई है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसिडर होती है. Then
there is paper transaction. Paper transaction is when there is no question of meeting the value of transaction. It is regarded as a paper transaction. जब भी किसी transaction के result के तौर पे उसकी वैल्यू बिजनेस मीट ना कर सके तो उसको हम पेपर ट्रांजैक्शन कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ अ बिजनेस हैज लॉस्ट इन्वेंट्री वर्थ $5,000 ड्यू टू फायर, this will change the financial position of the business and it will decrease its assets by $5,000. But there is no question of meeting the value of such transaction. Such type of transaction is regarded as a paper transaction. हमने एक एग्जांपल लिया है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक बिजनेस है जिसकी इन्वेंट्री $5,000 वर्थ की आग लग जाने की वजह से ज़ाया हो गई है. लेकिन इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में अब बिज़नेस के हाथ में कुछ भी नहीं आना, लेकिन बहरहाल उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे असर पड़ रहा है और $5,000 के वर्थ के बराबर उसके एसेट्स रिड्यूस हो रही हैं. तो एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके नतीजे में उसके जो बिज़नेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पर तो फ़र्क पड़े लेकिन उस बिज़नेस को ऐसा कुछ रिसीव ना हो, तो हम कहते हैं कि ऐसी ट्रांजैक्शन पेपर ट्रांजैक्शन है. Then there is another type of business transaction, the internal transaction. Internal transaction is also known as non-exchange transaction. These are the transactions in which no external parties are involved. These transactions do not involve the exchange of values between two parties, but the event constituting the transaction is measurable in monetary terms and it impacts the financial position of the business. Internal transactions ऐसी transactions हैं जिनके अंदर exchange of commodities, exchange of goods and services among the parties नहीं होता, इसको नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन भी कहा जाता. लेकिन इसके बावजूद ये मॉनिटरी मेजरेबल होती है और इसके साथ साथ ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी रखती है अपने बिजनेस के ऊपर. फॉर एग्जांपल, सच ट्रांजैक्शन में इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट. हमारी जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट्स होती हैं, विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उनको डेप्रिसिएट करते हैं. ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है. हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे तो उस डेप्रिसिएशन का इफेक्ट पड़ रहा होता है, लेकिन एज सच ये कोई एक्सटर्नल पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसलिए ये एक इंटरनल ट्रांजैक्शन है. And the last one is the external transaction. External transactions, also known as exchange transactions, are the transactions in which a business exchanges value with external parties. Normally, all the transactions other than the internal transactions are external transactions. तमाम ऐसी transactions जिसमें हम जो हमारा बिजनेस किसी भी एक्सटर्नल पार्टी के साथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज करता है वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहलाती है. Examples of the external transactions may include purchase of goods from the suppliers. इसमें external party involved है, supplier, इसलिए ये एक external transaction है. Sale of goods to the customer, customer एक external party है, इसलिए ये एक external transaction है. Payment of gas, electricity और water bills, payment of salary to the employees, इसमें हम देख रहे हैं कि एक एक्सटर्नल पार्टी साथ में इन्वॉल्व है, इसलिए ऐसी तमाम ट्रांजैक्शन जिसमें कोई एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो किसी भी एक्सटर्नल पार्टी के साथ, तो उसको हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कंसिडर करते हैं. Here is a summary of the discussion. We talked about the types of business transactions today. In general, there are 5 basic types of business transaction. Cash transactions, in which payment or receipt of cash is met immediately. Then the credit transaction, in which payment or receipt of cash is postponed to some future date. Then we talked about the paper transaction. In paper transaction, there is no question of meeting the value as a result of these transactions. And then internal transactions, all those transactions in which no external party is involved, but they have
the monetary impact on the financial statements of a business. And the last one is external transaction, in which a business involves with an other party for any type of transaction is called external transaction.